Good afternoon, everyone. Welcome to today's session. We'll be starting in a few minutes from now.
Good evening, everyone. Thank you for joining in today's session. And as the title suggests, we will be covering supports and resistances today. So, supports and resistances, they are a very crucial part for when it comes to technical analysis. As a matter of fact, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये टेक्निकल एनालिसिस के फाउंडेशन है या बेस है ऐसे बोल सकते हैं. Now, as we go good evening, into the topic, thank you we will for joining in covering today's session. Few and things today. So as one would be what is support, what is resistance, and then the importance of it when it comes to technical analysis. So the last part we just touch basing real quick. As a matter so before that, one thing that we involve in most of our webinars is the qualities of a successful trader or an investor. Now, this is something that we have covered over and over again, but we like to reiterate on these because these are a few skills that you would need as a trader or an investor when it comes to technical analysis. So first one being emotionally balanced and real quick. इसमें आपको fear नहीं होना चाहिए if the system gives a recommendation and आपको greed नहीं होना चाहिए. Now, अगर आपका system long बोल रहा है, you go long. अगर आपका system square off बोल रहा है, you square off. Don't wait for extra profit. Don't wait for another 10 rupees, another 5 rupees. कुछ नहीं करेगा. If the system tells you long, long. If the system tells you short, short. If the system tells you square off, stop loss, whatever it is, square off the trade. Then you have a set you have a set of rules that you have to follow strictly, religiously. Only then you can go ahead as only then you can go ahead and become a successful trader. Then you need to be skilled, you need to be trained, and these are things that are ongoing. Like एक बार आपने अगर कुछ सीख लिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम प्रोफेशनल बन जाते when it comes to trading. So most of the traders that we know are still learning, are still sharpening their tools. So ये skill and train, these are ongoing processes, and you need to be very active when it comes to sharpening your skills. Then work with a plan that is written down. Now there is a very good saying that says that your system should be so precise, so concise. So most of the traders that Can I just slow down? There is some are still learning, are still sharpening their sound issues. Guys, please bear with us. Go and pause. There seems to be sound issue. Hold on for a minute. Are ongoing processes, and you need to be very active when it comes to sharpening your skills. Then work with a plan that is written down. Now there is a very good saying that says that your system should be so precise, so concise. So most of the traders that Can I just slow down? There is some are still learning, are still sharpening their sound issues. Guys, please bear with us. Go and pause. There seems to be sound issue. Hold on for a minute. Are ongoing processes, and you need to be very active when it comes to sharpening skills. Thank you for bearing with us. I hope there is an improvement in the audio. Good saying that says that your system should be so precise, so concise. So most of the traders that Can I just slow down? There is some are still learning, are still sharpening their sound issues. Guys, please bear with us. Go and pause. There seems to be sound issue. Hold on for a minute. are ongoing processes, and you need to be very active when it comes to sharpening skills. Thank you for bearing with us. I hope there is an improvement in the audio. Good saying that says that your system should be so precise, so concise. So most of the traders that Can I just slow down? There is some are still learning, are still sharpening their sound issues. Guys, please bear with us. Just hold on a minute. We are facing some issues with the audio. Please bear with us. Thank you for bearing with us. I hope there is an improvement in the audio. Good saying that says that your system should be so
Yeah, so we're just testing the audio. Yeah, so we're just testing the audio. Yeah, so the issue seems to have been solved, and thank you for bearing with us. So, as I was mentioning, here are a few qualities that you require as a trader, and we were at work with a plan that is written down. So, if you see, most of the traders they have a very simple strategy that can actually be jotted down in a small 6 by 6 piece of sticky note. Correct. So आपकी strategy इतनी simple होनी चाहिए that you can write it down on a small piece of paper, and then जो plan है आपका या जो strategy है आपकी that you have to follow religiously. It can be anything. It can be something very simple. It can be very complicated. We recommend having something very simple so that it becomes easier for you to understand. And also, so there is this rule that if you are able to teach something that you know to a child, correct, so means you know it very well. So अगर आप एक चीज को एक simple form में अगर आप उसको jot down कर पाओ, and if you can write it down on a very small piece of paper in the most simplest language, मतलब you understand your strategy the best, then you should be a good reader and yeah. So I hope you guys are able to see the screen. Can you please confirm in the chat box? Okay. All right. So I think you should be able to see the screen now. All right. So yeah. So I hope you guys are able to see the screen. So can you please confirm in the chat box? So we were at good reader and constant learner. So you should always keep sharpening your skills, and you should keep reading new books related to the subject or something. So there is this thing that I've come across. So whenever I don't, I'm not able to get a hold of few things or anything of that sort happens. So you read a book, and there is a big probability that you will find a solution to it. So that is why you should always be a good reader and a constant learner. And jealousy is something that you should never have when it comes to trading, because अगर आप x कमा रहे हो and सामने वाला x plus 1 कमा रहा है, x plus y कमा रहा है, then you should be kind of satisfied with what you are making, because वो otherwise it would include greed in your trading system, and it will completely mess up everything. And never spend impulsively. Now
we are really sorry, guys. A few nicks and knacks here, a few issues. Yeah. So again, you should. Spending impulsively is not a very good habit. So because कैसा होता है ना कि you are traveling, आप घर जा रहे हो, and you see something on the street, and you are you know. You feel like you want to buy it, correct? And without even understanding or knowing whether you need it or you don't need it, you take that decision, you purchase it either anyways. So that is impulsiveness. So this kind of reflects in your trading also. So say for example, there are sessions when the market is absolutely sideways, and your system is telling, it's not giving you any sort of signal. But then as the day goes by, you might feel this itch to take a trade. So that is impulsiveness. And if you fall for that itch, that is impulsiveness. So you should never have impulsiveness when it comes to trading or in real life. Now, uh, doesn't involve in illegal activities or gambling to make money. So that is kind of self-explanatory. Now, coming on to our support and resistances, as I mentioned, we'll be discussing about what are supports, what are resistances, how to describe support. I mean, how do you understand support? How do you understand resistances? And the importance of those things when it comes to technical analysis. Now, the first thing is support. So, आपने हमेशा सुना होगा, in our webinars also we talk about supports. So, what exactly are supports? So, imagine a situation wherein say a particular underlying is continuously falling, and उसका कुछ ऐसे आइडिया ही नहीं है, वो कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है, एंड देन वन फाइन डे आप देख रहे हो कि इट्स फॉल हैज हॉल्टेड, एंड आने वाले 3 दिनों में आप देख रहे हो कि वो एक ही लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, आई मीन एक ही लेवल पे इट इज कंटिन्यूसली स्टॉपिंग. सो वो आपका एक फ्लोर, पोटेंशियल फ्लोर बन गया. सो दैट इज बिकॉज फ्लोर पे इज वेयर थिंग्स रेस्ट. सो आपका वो फ्लोर बन गया, पोटेंशियल फ्लोर बन गया. And that is also a place where traders prefer to place buy orders. Now, how do we recognize supports is something that we'll understand later in the session. But अभी के लिए अगर मुझे इसे example के साथ आपको समझाना होगा, then I'll take a chart and I'll see if yeah. So in one of the charts, especially अभी मैं let us say for example, let us take Nifty. Okay, आप निफ्टी का चार्ट एनालाइज कर रहे हो एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज. सो यहाँ पर अगर मुझे एक एग्जांपल आपको देना है, then classic example would be something that happened around this point. Correct. So 3 days it was negative opening and then continuation. But then around 23,000 अगर आप देख रहे हो, 23,800 900 के पास आप देख रहे हो, there is a floor. फ्लोर यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज फॉर आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अराउंड 9 सेशंस इट हेल्ड ऑन टू दैट लेवल. मतलब वो लेवल टूटा नहीं. अगर आप देखते हो, अगर आप एक फ्लोर पे खड़े हो, unless and until the floor comes to an end, you don't fall down, correct? So ये एक kind of floor हो गया for the price. And यहीं से आप देख सकते हो, then the trend started, then there was again a correction. ये this is probably it was finding a ceiling, and ये जो scenario है, this is what we call a breakout. अभी ये breakout भी क्या है, उसका कैसा understanding है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा. But for the time being, this is what we would call a support, because prices at this point halted their move. जो उसका downfall था वो halt हुआ, and वहाँ पे आप देख रहे हो कि एक थोड़े दिनों तक वो level उसने hold किया, and then वहाँ से there was a trend reversal. Now that we have understood what a floor for the price is, now this is a level that traders will be looking at to go long, correct? So अभी इसका क्या ये है कि अगर प्राइसेस सपोर्ट पे है तो अभी सपोर्ट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो भी हम लोग आगे वाले सेशन में बताएंगे. बट दिस इज नॉर्मली वेयर यू सी ट्रेडर्स पुटिंग अप देयर लॉन्ग ऑर्डर्स. नाउ रेजिस्टेंस, एज मैंने मेंशन किया आपको, एक फ्लोर जैसे होता है, वैसे ही देयर इज आल्सो सीलिंग. सीलिंग मतलब मल्टीपल टाइम्स प्राइस वहां पर जाता है, देयर इज अ रिजेक्शन, एंड देन द प्राइसेस दे फॉल डाउन.
or they stay there for some time. Now, this is normally the place where people place sell orders. That is the reason वहाँ पे आप selling tail वगैरह देखते हो, and the net outcome is something like selling tail, or all those candle patterns with long upper wicks. And this normally happens because there are many traders who place sell orders around that level. Now we'll see how to identify support and resistance levels. Now अगर आपने हमारे बैंक निफ्टी ये जो एक्सपायरी के जो हम लोग वेबिनार्स करते हैं वो आपने फॉलो किया होगा. I invariably speak about all these things, and that is price action, moving averages and psychological level. अब जब मैं साइकोलॉजिकल लेवल की बात कर रहा हूँ, देन आई एम लुकिंग एट समथिंग लाइक, अभी से फॉर निफ्टी की जब मैं बात करूँ तो समथिंग लाइक 24,000 जो राउंड फिगर्स हैं, करेक्ट, 24,000, 25,000, 26,000, ये जो राउंड फिगर्स है, दे आर साइकोलॉजिकल लेवल्स. सो अराउंड दैट लेवल्स, वो लेवल्स पर आप थोड़ा एक हॉल्ट देखोगे इन द फॉल और इन द अप मूव. सो दोज आर साइकोलॉजिकल लेवल्स. वहां पर थोड़े हर्डल्स आते हुए दिखाई देते हैं जहां पे ट्रेंड जो ऑनगोइंग ट्रेंड है वो आपका स्टॉप होता है, एंड देन देयर इज अ चेंज इन द ट्रेंड. सो दोज आर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स. देन टू आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स वी हैव मूविंग एवरेजेस. आपने हमारे वेबिनार्स में देखा होगा, वी प्रेफर टू कीप 3 मूविंग एवरेजेस, दैट इज 5, 13 and 21. Now, for me, when I'm keeping those short-term moving averages, 21 is the longest period, correct? So, मेरे लिए major एक moving average जो है वहाँ पे, that is the 21 period moving average. If the price comes to the 21 period moving average, it ऐसा होता है कि it has come probably at a monthly average price, monthly because there are 22 working days. So 21 period moving average पे price आ गया. So that becomes a very crucial level for us. For us as in for the market. So when the market takes a note of it, वहाँ पर थोड़ा shorts जो होंगे वो शायद score off करेंगे, जो fresh longs आना चाहेंगे वो enter करेंगे. So that is one of the level where 21 period moving average might act as a support. वहीं पर say for example if the price is already below the 21 period moving average, correct, so ये जब भी ऊपर जाएगा the 21 period moving average will act as a resistance. अभी I will show you with an example. Just give me a second. I type in EMA, which is exponential moving average. Now I'll not be using the exact 21-day moving average because यहाँ पर एक ही scenario में आपको probable support, probable resistance बनाना थोड़ा difficult है. So what I would say is ये देखिए, यहाँ से एक up move start हुआ था. When the prices came around the 21-day moving average, exponential moving average, there was a halt in the down move, and then there was an up move. Correct. Abhi fortunately we have a situation, though this is not a picture perfect situation, but यहाँ पे एक situation है जहाँ पे the prices acted as a resistance when the 21-day moving average acted as a resistance. 3 दिन negative candles बने, and then there was an attempt, the index made an attempt to go higher, but multiple times आप देखिए when it came around the 21-day exponential moving average, there was either a selling tail or long upper wick and all those sort of candle patterns, and वहाँ से prices closed lower until the 16th को there was a breakout, and that is a situation where the resistance, हम लोग ये situation में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, the resistance is taken out. And then ऊपर गया again, the 21-day exponential moving average acted as a support. Now one thing that I would like to reiterate, this is not a trading system, this is a simple observation that जो मैंने आपके सामने बनाया यहाँ पर price plot कर दिया, 21-day exponential moving average plot कर दिया, and this was the outcome. This is just an example of how a moving average works as a support and resistance. And then there is simple, अगर आप third point देखोगे, then there is price action. Now price action मैं क्यों बोलता हूँ, because see, all these candles, they tell you what the traders are thinking at a particular price. Abhi when we were in the month of say July, August, यहाँ पे आसपास हम लोग थे, the traders were very skeptical about the index going about 25,000, correct? So ये जैसे ही आप देख रहे हो, you should be able to see the prices. आप देख सकते हो कि वहाँ पर left hand side पर जो है मेरा price move हो रहा है, वहाँ पे आप देख रहे हो कि around 25,000 है, correct? जब ये 25,000 के पास आता था, यहाँ पर थोड़े upper wicks बन रहे थे, correct? Upper wicks बन रहे मतलब either there is a profit booking or the bears are coming in, but something of that sort. मतलब the bulls are losing their stand at that point. Then there was
attempt to break out, and ये क्या candle pattern बन रहा है, this I'm pretty sure that you guys would know because we had explained it in our candle pattern webinar. And वहां से अगर आप देखो तो 3 दिन नेगेटिव था. सो ये जैसे नाउ यहाँ पर मैं आपको दो चीज बोल सकता हूँ कि बिकॉज दिस इज अ 25,000 लेवल, दिस इज अ साइकोलॉजिकल लेवल. सो जब भी आपका बिग फिगर चेंज होता है दैट बिकम्स अ साइकोलॉजिकल लेवल, करेक्ट. एंड सिमिलरली ये at the same time this was also a price action level because traders ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि this seems to be a bit whatever it is XYZ, यहाँ पे इससे ज्यादा शायद ऊपर नहीं जाए. सो साइकोलॉजी आपको ये बोल रहा है कि एट दैट पॉइंट कि यहाँ से थोड़ा सेलिंग आ रहा है. नाउ सेम थिंग अगर आप नीचे देखोगे तो अराउंड 23,800 23,900 के बीच में भी देयर वाज अ बिट ऑफ स्केप्टिसिज्म व्हेन इट केम टू एडिंग फ्रेश शॉट्स. बट यहाँ पर ऊपर भी मोमेंटम नहीं आ रहा था, बट देन इट वाज नॉट गोइंग डाउन. सो दिस इज वेयर समथिंग लाइक अ प्राइस एक्शन विल कम इनटू प्लेस. अभी आप देखिए यहाँ पर इट वाज नॉट एबल टू गो अबाउट 24,400, बट वंस इट वेंट अबाउट 24,400 it did not come below that level. Correct. Same thing with 25,000. Abhi 25,000 important क्यों है? Because just keep this in mind. Traders were initially thinking that 25,000 is probably not going to break. But once it broke above that, all those who missed an opportunity of entering probably at this point, जहाँ पे it broke about 25,000. I mean, it came down to around 25,000 and वहाँ से वो decisively turn हुआ. They are going to traders who missed that opportunity, they are going to enter every time it goes back to that level, unless and until something literally turns negative or something literally turns bad. So this is how a price action or historical price action जो है वो आपको help करेगा. Another way a historical price action will help you understand supports and resistances is through trend lines. Trend lines again are some important tools when it comes to understanding the trend of the market. Now trend line हम लोग कैसे बनाते हैं? We either join the supports that are so multiple supports join करके आप lower trend line बनाते हो. Again this is not a picture perfect trend line, but यहाँ पर मैंने आपको example के लिए I have shown you this. And same thing आप कर सकते हो by joining the resistances. करेक्ट. जब भी आप हाइज जब भी आप ज्वाइन करके बनाते हो, those trend lines are called as upper trend lines, they act as resistance. and जब भी आप lows ज्वाइन करके बनाते हो, they are called as supports, and they are called as lower trend lines, and they tend to act as a support. Now with those things out, we will look at the type of supports and resistances. Again this is something that I explained in the previous slide. So horizontal levels मतलब एक particular level जहां पर multiple times the market has moved. अभी now this is a classic example of horizontal level. See, अभी I will just draw a horizontal trend line here. Correct. So this was early 2024. Exact अगर मैं आपको बोलूं तो starting from 1st of Jan 2024 all the way till 14th Feb 2024. करेक्ट. यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल हर्डल्स थे उसको फॉर द इंडेक्स टू ब्रेक अबव 21,800. But once it broke above that level, see the number of times it has tested that level. One, that was on March, that was in the month of March. Again in the month of April, May, June. Every time it goes to that level and then वहां से there is a reversal. Now यहाँ पर क्या हो रहा है कि earlier जो support था, earlier जो resistance था, that is now acting as a support. This is also called as change in polarity. इसको water level भी बोलते हैं. But this is exactly or a textbook pattern horizontal resistance, horizontal support in this case. And यहाँ पर resistance है, but if you were at this point, recognizing that it was a resistance is a bit difficult. But यहाँ पर आप clearly देख सकते हो कि multiple times it has acted as a support. So this is how horizontal lines work. Now there might be better examples when it comes to horizontal levels acting as a resistance or support, but for the convenience we'll be just taking this as an example. यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है, डाउट है, please put it in the chat box. I'll take a pause for 2 minutes, for a minute or so, and then we can go ahead.
I hope the audio was fine. We are really sorry. We are facing a bit of a glitch today. Yeah. So anybody has any support or resistance? Questions or queries about what we have done when it comes to support resistance? So someone has asked. Okay, great. So we have a query of when it comes to time frame, do they work the same? So I'm assuming that is the query by what I'm able to read. So one thing that technical analysis is very granular in nature. So जब मैं granular बोलता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक आपका कॉन्सेप्ट अगर आपके डेली चार्ट पर चलेगा वो आपके मंथली पर भी चलेगा वो आपके ईयरली चार्ट पर भी चलेगा 15 मिनट पे भी चलेगा 1 मिनट पे भी चलेगा सब पे चलेगा. The significance of that analysis remains on how well you can plot it. So it is literally like driving a car. मैं सबको यही example देता हूँ. When it comes to technical analysis, it is like driving a car. आप एक बार गाड़ी चलाना सीख जाओ, आप मारुति भी चला सकते हो, मर्सिडीज भी चला सकते हो, माइबाक भी चला सकते हो. But the point is how well you do it. Now, why I choose higher time frames? Just give me a second. मैं आपको उसका भी example देता हूँ. So now this is the daily chart of Nifty, correct? So now I will go to 1 hour. यहाँ पे मुझे दिख रहा है this is 1 hour. Now just look at the amount of noise that we have in the chart. Now अगर आपको ये noise लग रहा है, wait till we go on to 15 minutes. ठीक है? Then wait till we go on to 1 minute. Just look at the amount of noise that we have here. करेक्ट. यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि मल्टीपल टाइम्स इट इज गोइंग अबव एंड बिलो अ पर्टिकुलर मूविंग एवरेज एंड देन टेल्स बन रहे हैं, बाइंग टेल बन रहा है, सेलिंग टेल बन रहा है. नाउ अनलेस एंड अंटिल यू हैव द ब्रेन्स ऑफ अ सुपर कंप्यूटर, correct, or the analytical capabilities of a supercomputer, which I mean most human beings brains are capable of, but physically we cannot sit and understand and analyze all these things that fast, correct? So you require some help. So unless and until you have those sort of powers, those sort of capabilities, a 1 minute time frame pe doing technical analysis and trying to trade is difficult. So mera threshold is 15 minutes because it has a very good balance between noise and trend. मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि 15 minutes is something that I prefer when it comes to looking at the charts. Now this I'm sorry, I will go back to Nifty. Yeah. So यहाँ पर I will select 15-minute time frame. So यहाँ पर I have a balance of noise and trend. So this certainly is a bit more clearer, at least for me. And 1 hour is the most preferred time frame for me. अगर मुझे और नीचे जाना है then 15 minute पे I'll stop because उसके नीचे it is, for me at least, it is complete noise. And मेरे को I mean as a trader or as an analyst, I like to have more amount of trend on the chart than noise. Okay, so moving ahead, one topic that we would not be touching base right now on at a very deep level is Fibonacci levels. Now आपने Fibonacci तो सुना होगा, ये कैसे काम करता है ये हम लोग बाद में समझेंगे because ये आज के वेबिनार के बाहर है. So आपने say for example we take a stock, ठीक है, हम लोग ने रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट लिया है यहाँ पर एंड ओके से फॉर एग्जांपल ये मूव हो गया, मुझे देखना है कि ये फॉल कहाँ पे रुकेगा.
नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्राइंग एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज ये अराउंड दिस टाइम फ्रेम इट हिट अ न्यू हाई एंड देन इट वाज ट्राइंग टू मूव लोवर. सो दैट इज व्हेन समथिंग लाइक अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट कम्स इनटू प्लेस. अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में आपको बहुत क्रूड लैंग्वेज में समझाऊं तो इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड कि करंट फॉल जो है वो प्रीवियस मूव का कितना परसेंटेज हुआ है. करेक्ट. सो व्हाट आई विल डू इज ये एक हम लोगों ने अप मूव देखा था and using a Fibonacci retracement we can understand what are the probable levels. Now this is very basic language that I'm using right now. Fibonacci has a much more deeper understanding, but then अगर यहाँ पर मैं देखूं तो I get परसेंटेज लेवल्स यहाँ पे 23.6 है, 38.2 है, 50% है. सो वहां पर जाकर मुझे एक आइडिया लगता है कि व्हाट आर द प्रोबेबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स एट दिस पॉइंट. Similarly, I can also use Fibonacci extension. Now, earlier Fibonacci levels used to be used with Elliott waves. Now, Elliott waves are a bit complicated topic, and I mean you can spend days, plotting Elliott waves, and yet 2 or 3 analysts will have multiple counts. So फिबोनाची एक्सटेंशन में आप कब प्लॉट करोगे, एक्सटेंशन कब प्लॉट करोगे, जब आपने देखा कि ये ट्रेंड खत्म हो रहा है, व्हेन यू आर प्रोबेबली हियर. यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आपने ये रिट्रेसमेंट प्लॉट करके देखा कि करेक्शन कितना डीप हुआ है आफ्टर एन अपमूव. अभी आपको देखना है कि ये अपमूव हो गया, ये रिट्रेसमेंट हो गया, यहां से कितना ऊपर जा सकता है. सो दैट इज व्हेन अ फिबोनाची एक्सटेंशन कम्स इनटू प्ले. सो फिबोनाची एक्सटेंशन प्लॉट करने के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए. वन इज द स्टार्ट ऑफ एन अपमूव, end point of an up move, and the recent correction का low. Correct. But Fibonacci retracement point करने के लिए, plot करने के लिए, you just require 2 points. One is the low of the start of the rally, and another one is where the rally terminated. So these are a few ways in which you can understand. That will help you understand support and resistance levels. Now we come at volumes and support and resistances. Now एक point पे आप एक understanding यहाँ पर रहनी चाहिए आपको कि see when I'm talking about support and resistance level, they mean absolutely nothing if unless and until the trend changes or there is a breakout or a breakdown. अभी यहाँ पर आप देख लीजिए कि निफ्टी में जैसे मैंने आपको say for example we'll take into consideration this chart itself. I'll just clean up the chart. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि अराउंड दिस लेवल बहुत सारे हर्डल्स थे रिलायंस इंडस्ट्रीज को. करेक्ट. अगेन मैं स्टॉक स्पेसिफिक दे रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ. उसका मतलब ये नहीं है कि दीज आर रिकमेंडेशंस, दीज आर सिंपल चार्ट रीडिंग्स. सो यहाँ पर मैंने देखा कि वो हर्डल फेस कर रहा है यहाँ से निकलने को. नाउ हाउ विल आई अंडरस्टैंड दैट दिस अप मूव इज गोइंग टू हैपन आफ्टर द ब्रेकआउट. Now, one thing to keep in mind is अगर ये रेजिस्टेंस पर आते ही आपने एक रिवर्सल देखा ना, फॉर एग्जांपल इन दिस सिनेरियो. करेक्ट. यहाँ पर वो रेजिस्टेंस पर था एंड देन इट मूव्ड लोअर. if this down move is not supported by volume, then the down move में पार्टिसिपेशन कम है. सिमिलर थिंग विथ रेजिस्टेंस. अगर वहां पर आपने देखा कि ये ऊपर जाते ही जैसे ही इट टर्न्स डाउन, there is a strong volume when the market goes down. Correct. So that resistance level उसका significance जो है काफी improve हो जाता है. The same thing with support. अगर say for example यहाँ पर जैसे ही market आया, ये up move में आपको volume नहीं मिल रहा है, मतलब there is something wrong. But ये up move में अगर आपको volume है, मतलब it is going up with participation. And whenever there is a bounce of a support or a resistance with participation, उसका जो strength है वो थोड़ा reinforce हो जाता है. The strength kind of improves. And the same thing happens when there is a breakout. अभी Reliance Industries आप देख रहे हो कि कितने महीने से यहाँ पे consolidation में था, and then one fine day it broke out of it. अभी यहाँ पर if there is participation, मतलब there are many people who are participating in this breakout. So the probability of Reliance Industries continuing this previous uptrend यहाँ पे थोड़े बढ़ जाते हैं. यहाँ तक किसी को कुछ query है, कुछ पूछना है, बोलना है? I'll hold for a second or so. Yeah. So this is a very good question, sir. हमारी एंट्री एंड एग्जिट कब होगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद या स्टॉप लॉस कितने परसेंटेज का होना चाहिए? सो
अंडरस्टैंड वन थिंग, जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हो, देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर. अभी जैसे हमारे प्रीवियस वेबिनार में आई गिवन यू एन एग्जांपल. जब आप खाना खाने बैठते हो, आप सिर्फ चावल नहीं खाते हो, आप उसके साथ दाल भी खाते हो. सो आप उसके साथ सब्जी भी खाते हो, अचार भी खाते हो. सो सिमिलरली जब भी आप एक ट्रेडिंग सेटअप बनाने को बैठोगे, दिस इज नॉट द चार्ट दैट यू आर गोइंग टू हैव. बिकॉज ये अगर सिर्फ इतना लेके अगर आप ट्रेड कर पा रहे हो, देन ट्रस्ट मी, आपने आई वुड से आपने निर्वाणा अचीव कर लिया व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग. बट देन देर आर ऑल्सो अदर टूल्स दैट यू वुड वांट टू इंक्लूड. से फॉर एग्जांपल आरएसआई. आरएसआई आपको बताएगा कि ये अप मूव में कितना मोमेंटम है, कितना स्ट्रेंथ है. और यू मे ऐड सम अदर इंडिकेटर विच सेज एडीएक्स हुआ, एमएसीडी हुआ, एनीथिंग. Correct. So you will look for signals or confirmation of whether the momentum is exhausting or the momentum is rising, या जो भी है. अभी फॉर एग्जांपल आरएसआई अगर मैं प्लॉट करूं, आरएसआई इज अनदर टूल जो आप मेरे सिस्टम में देखते रहोगे. सो ये कंसोलिडेशन में जस्ट लुक एट हाउ द मोमेंटम हैज ड्रॉप्ड. करेक्ट. आरएसआई आपको ये बताएगा वेदर देयर इज मोमेंटम और वेदर इट इज गेनिंग मोमेंटम और लूजिंग मोमेंटम. करेक्ट. जैसे ही ये रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, यू सी देयर इज अ ड्रॉप इन द मोमेंटम, एंड देन यू लुक एट आरएसआई अराउंड दिस लेवल. आई एम सॉरी. Yeah. Then you look at the RSI when it breaks above this. So आपके multiple systems होने चाहिए, होने चाहिए as in you have to look for confirmation from multiple analytical tools. Now, just because I have shown you an example of 21-day exponential moving average doesn't mean that I'll just use 21-day exponential moving average. I can have, as you might have seen in my webinars, I have 5, 13, and 21. Now, I have 3 exponential moving averages because I want a signal that is fast. I want something that is a bit medium term, and then a long term moving average, that is 21 in this case. So you have to mix and match when it comes to developing your system. So and अगर stop loss की बात मैं करूं तो percentage के हिसाब से नहीं होता. So one thing that you have to keep in mind is whenever you are looking at a stop loss, it should be always from a technical standpoint. अभी टेक्निकल स्टैंड पॉइंट में क्यों बोलूं, अभी फॉर एग्जांपल आपने देखा कि यहाँ पे कंसोलिडेशन है एंड यू सी दिस ब्रेकआउट, देन आइडियली ये जब तक ये लो टूटता नहीं है, यू शुड बी इन द ट्रेड. नाउ थियोरेटिक आप ऐसे बोल सकते हो कि ये तो 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, बट थियोरेटिकली दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू शुड डू. ओके, बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हम लोगों ने ये कंसोलिडेशन देखा था एंड देन दिस इज ब्रेकिंग द अपर बाउंड ऑफ द कंसोलिडेशन. करेक्ट. अपर बाउंड एज इन ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जो रिजेक्शन फेस कर रहा था अराउंड 3000, इट हैज फाइनली मैनेज टू ब्रेक अबव 3000. सो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, अराउंड 2700, 2750 के पास. Why? Because this part was the lower bound of the consolidation. So this is how you can actually develop your systems around consolidation, develop your systems around breakouts. Now अगर आप देखो during a consolidation there is something, अगर आप थोड़ा deep dive करोगे तो you will see Wyckoff patterns. Wyckoff patterns में भी there are multiple legs. तो आप अगर legs उसको properly read कर पाओ तो you will know when there is going to be an up move, when there is going to be consolidation, कब तक continue होगा, कब there is a कब surge आ सकता है in the stock price and all those things. अभी Wyckoff pattern अभी मैं touch नहीं करूंगा, but again it is certainly going to be a part of what we'll be covering in the sessions to come. But for the time being, you have to understand one thing. You have to look at either momentum, or you have to look at if the momentum is building whenever there is a breakout, or whenever prices are bouncing off a support, or if it is losing momentum, और आपके confidence कम हो रहा है कि आप move continue होगा नहीं होगा करके. So there are multiple things that you need to mix and match. I hope I have not confused you. I hope I have been able to answer your query. अभी इसको ट्रेडिंग सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें वो हम लोग अभी आपको तुरंत तो नहीं बताएंगे. वी नीड टू इंट्रोड्यूस एवरीवन टू few of the technical tools, technical indicators, and then we want you to develop a system by yourself. Because see, जो सिस्टम मेरे लिए चल रहा है ना वो मेरे कलीग के लिए नहीं चल सकता, बिकॉज आई नो द रिगमोरल ऑफ हाउ द सिस्टम वर्क्स. मेरे कलीग को नहीं पता होगा कि इसका ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है. करेक्ट. So there is no what you say one shot solution for everything.
Now, going ahead, now that we have understood how supports can help you when it comes to, how volume can help you when it comes to supports and resistances. Now, now trading the supports and resistances. अभी जैसे हमारी क्वेरी थी, करेक्ट. सो आपने देखा कि ये एक सपोर्ट के पास है, ठीक है. से फॉर एग्जांपल आई विल टेक यू बैक टू द चार्ट्स. ठीक है, आप अभी से यहाँ पर हो, ओके. You've seen that यहाँ पे probably थोड़ा support बन रहा है. Then the ideal thing for you to do is, you know कि this around 2700 is going to be your base, okay. So when the prices come around 2700, आप एक थोड़ा उसको बफर रख के नीचे का स्टॉप लॉस रख दीजिए. नाउ स्टॉप लॉस रखने के भी बहुत सारे तरीके हैं. यू कैन यूज व्हाट द ATR is. आप देख सकते हो कि और एन एवरेज इसका डिविएशन कितना रहा है फ्रॉम अ पर्टिकुलर मीन लेवल एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड देन प्लेस योर स्टॉप लॉस, करेक्ट. आप तो फिर ये जैसे ही नीचे जाएगा, आप उसका प्रॉब्ली वहां पर आप एक लेवल देख के आप उसका स्टॉप लॉस रख सकते हो, एंड देन वेट फॉर द प्राइसेस टू बाउंस बैक. एंड वंस द प्राइसेस हैव बाउंस बैक एंड दे आर गोइंग हायर, देन जैसे ये रेजिस्टेंस पे आएगा आप सेल कर देना, करेक्ट. नाउ अगेन मैं आपको कोई सिस्टम एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू कैन analyze supports, how you can probably work around how to trade when a particular stock or an underlying is near support, is near resistance. So आपको सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि you have to identify whether it is a strong support. You have to identify if there is a probability of going down. Strong support आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप देख रहे हो कि prices are bouncing off a particular level that have acted as either resistances earlier or as supports resistances, because यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्राइस ने उसको रेजिस्टेंस कर लिया था, एंड देन नेक्स्ट इंस्टेंस में आप देख रहे हो कि अराउंड दैट लेवल सपोर्ट बन रहे थे, एंड अभी जो प्राइस है इट इज प्लेस समवेयर इन बिटवीन दैट. सो देन दैट इज वेयर यू वेट एंड यू वेट फॉर द प्राइसेस टू टर्न. जैसे ही प्राइस आपके टर्न हो जाएंगे, अगर उसमें वॉल्यूम बिल्डअप है, इफ देयर इज गुड इनफ मोमेंटम बिल्डअप, देन देयर इज अ प्रोबेबल टर्न फ्रॉम द सपोर्ट लेवल. एंड जैसे ही you have identified a probable support level, define your stop loss. If you want to be a successful trader, the first thing that you should know as a trader is to manage your risk. अगर आपने risk management capability नहीं है, no matter how big or how successful a trader you are, net आपका end शायद zero ही होगा. क्यों? बिकॉज आप अपने प्रॉफिट्स आप देख रहे हो कि दे आर आपके हैं डिसेंट प्रॉफिट्स, एंड जैसे ही पोजीशन आपकी एक बार उल्टा बैठ जाती है, बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम, करेक्ट. जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम. यू बेट ऑन द प्रोबेबिलिटी. नाउ देयर विल बी टाइम्स व्हेन द मार्केट इज अगेंस्ट यू, करेक्ट. ऐसे टाइम में इफ यू डोंट हैव अ रिस्क मैनेजमेंट, you will have hope that the prices will go up again, and this will end up taking away all the profits you have made till date. So this is how you can probably trade when the markets are in a range. Now इसके भी अगर आप देखोगे, जब भी हम लोग supports and resistances की बात कर रहे हैं, there is also consolidation phase. अगर आप chart patterns पे देखोगे, there is a rectangle formation, there is a triangle formation. All of them are actually form of consolidation, one form or the other form of consolidation. अभी इसको ट्रेड करने के बहुत तरीके हैं. ट्रायंगल जब भी रेक्टेंगल जब भी बन रहा है, आप सपोर्ट पे परचेस करो, स्लाइटली नीचे उसका स्टॉप लॉस रखो, रेजिस्टेंस पे आप बेचो. नाउ थियोरेटिकली दिस साउंड्स वेरी परफेक्ट. व्हाट इफ देयर इज अ ब्रेकडाउन? सो दैट इज व्हेन योर स्टॉप लॉस कम्स इनटू प्ले. ट्रायंगल में जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हो, आपका मोमेंटम कम होते जा रहा है. नाउ अगेन चार्ट पैटर्न्स इज समथिंग दैट विल टच बेस लेटर, बट देन just for your understanding, एक brief मैंने आपको idea दिया how you can monetize or how you can understand a setup when it comes to when a particular underlying is close to a support or a resistance. Now we'll understand breakouts. Now जब भी price अगर आपके support या resistance को तोड़े, that is a breakout. Now ब्रेकआउट अभी आपने देखा कि एक कंटिन्यूअस मूव के बाद देयर इज अ बिट ऑफ कंसोलिडेशन, एंड देन अगर वो ब्रेकआउट हो रहा है इन द प्रीवियस डायरेक्शन, मतलब से फॉर एग्जांपल रिलायंस में, करेक्ट, आपने यहाँ पर देखा कि एक स्ट्रॉन्ग अप मूव था, देयर इज अ कंसोलिडेशन एंड नाउ देयर इज अ ब्रेकआउट, करेक्ट. सो दिस मूव इज कॉल्ड अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस मूव. नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, अगर ये मूव में अगर स्ट्रेंथ नहीं है, देन दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ब्रेकआउट, दिस इज अ फॉल्स ब्रेकआउट. अभी ये पॉइंट पे भी अगर आप देखोगे, देयर वाज अ बिट ऑफ ब्रेकआउट हियर, एंड देन वो प्राइसेस कुड नॉट सस्टेन दैट लेवल, एंड देन वो
एक दिन में सीधा नीचे आया. दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ फॉल्स ब्रेकआउट. यहाँ पर भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स रहे हैं, बट यहाँ पे वो सक्सेसफुली क्लोज भी हुआ था अबाउट द रेजिस्टेंस लेवल, जो बहुत लोगों ने प्रोबेबली यहाँ पे लॉन्ग किया था. एंड समवन विदाउट अ स्टॉप लॉस, ठीक है, उस दिन माइट हैव हैड अ वेरी बैड डे. करेक्ट. बिकॉज अब देख सकते हो कि कितना बड़ा फॉल आया उसमें. एंड अगर मैं आपको एग्जैक्टली बोलूँ तो 3 जून का जो क्लोज था वो था अराउंड 3020. एंड 4 जून का जो क्लोज था दैट वाज 2794. सो जिन लोगों के स्टॉप लॉसेस नहीं थे इन प्लेस, या जिन लोगों ने ट्रेड होल्ड किया था, so for the day they might have faced a lot of stress, they might have faced a lot of pressure. But again, once it broke out of 3000, then there was a smooth up move. वो सीधा then it tested around 3200. वहां से आपको 200 पॉइंट की मूव मिली. But then again it's just entering into sideways. So these are one of the few ways with which you can trade breakouts. एंड ब्रेकआउट्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉल्यूम. जैसे मैंने आपको बोला था कि ये मूव में अगर मुझे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, मतलब पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस ब्रेकआउट, मतलब द स्मार्ट मनी इज प्रोबेबली लुकिंग एट समथिंग एल्स. करेक्ट. बट अगर यहाँ पे आप ब्रेकआउट देख रहे हो, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, मतलब देयर आर मेनी पीपल हु आर लुकिंग एट दिस ब्रेकआउट एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस अप मूव. सो we have actually run out of time. What I would do is we would open up the floor for Q&A. आपके जितने भी कुछ queries हैं, कुछ आपको पूछना है about supports and resistances, please let me know. We'll be online for another 2 minutes. So if you have any questions, if you have any queries, please put it in the chat box. I'll just stop sharing my screen. Please put it in the chat box. We'll be more than happy to help you out. So how can we place on the option side? Okay, so one thing you have to keep in mind is option is a derivative product, correct? So अगर आप direction खेलना चाहते हो, if you want to benefit from a particular direction, that is when you go long or short an option. So if your underlying, so first thing you have to do is analyze your underlying. And if at any point of time आपको लगा कि your underlying is not moving in the desired direction and is breaking a few crucial levels, that is when you place a stop loss, or place a stop loss on the underlying, and then accordingly square off the option position that you have. Theoretically, ideally, that is how you have to do, because yeah. So golden crossover, so एक आपको याद रखना है. So ideally there are many, from what I have heard or from what I've read, when a 50-day moving average crosses a 200-day moving average, that is called a golden crossover. Okay. But then with increasing number of technical analysts in the industry, so अभी उसका definition ऐसे हो गया है कि whenever a short term moving averages crosses a long term moving average, short term यानी say for example a 5 period crossing a 20 period moving average,
सो उसको भी आजकल गोल्डन क्रॉस बोलते हैं, गोल्डन क्रॉस ओवर या डेथ. So a positive crossover is considered as a golden crossover, and a negative consider breakdown is considered as a death cross. So so it is basically a short term moving average crossing a long term moving average. सो अगर आप क्लासिक टेक्निकल एनालिसिस के बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो इट इज जस्ट द 50-day एंड द 200-day दैट इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन क्रॉस, because 200 is basically it is considered as a benchmark for a 1 year average price. So because so 200 क्यों calculate किया जाता है? So whenever these moving averages were calculated, they did not have the kind of systems that we have today. So calculating a 252-day or a 250-day became a bit more tedious. So that is why it was rounded off to something like 200-day moving average, 50-day moving average. So 50-day basically, is 1/4 of 200-day. So if 200 is your 1 year, then this becomes around like a quarter. So I hope I have solved your query. Now, एक चीज आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि whenever you are selecting your moving average, make sure you have a logic as to why you are selecting that. अभी अगर आप सिंपल ये बोल रहे हो कि एक पर्टिकुलर चैनल पे मैंने देखा कि ये एक मूविंग एवरेज है जो उसने बैक टेस्ट करके दिखाया मुझे चलता है, एंड यू ट्राई दैट, देन यू आर हेडेड फॉर ट्रबल. बट अगर आप एक मूविंग एवरेज ले रहे हो, उसका लॉजिक आप समझ रहे हो कि ये पर्टिकुलर पीरियोडिसिटी में क्यों यूज कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड या इंटरवल में क्यों यूज कर रहा हूँ, देन you can probably make money from it. So any system that you develop on your own, you have to keep one thing in mind: you have to understand the rig morale of it. अगर आपको rig morale मतलब you have to understand whatever the basics are, you have to understand how that system will work, you have to understand वो क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है. So these are a few things that you have to keep in mind. So I think that brings us to the end of the session. Thank you guys for joining in, and we'll see you in our next session.